हे देयर, स्वाति हो। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द मेडिसिन्स दैट द डॉक्टर रिकमेंडेड, बेसिकली द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जो चीज़ें मैं ले रही थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी एंड विच हेल्प मी अलॉट बिकॉज मेरी डॉक्टर को कोई नैगिंग नहीं सुननी पड़ी अबाउट बैड एनर्जी लेवल्स और लेग पेन, बैक पेन्स, नथिंग एज सच एक्सेप्ट दैट वन टाइम जब मैंने पॉस्चर खुद ही अपना गलत रख कर बैठा करती थी एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इशू अराउंड माई लोअर एब्डोमेन एरिया in terms of pain, but not because of deficiencies. So ideally, as soon as you go to the doctor, or the doctor आपको prescribe करती है taking vitamin B, which is folic acid, one of the variants of vitamin B, folic acid, iron and calcium. ये शुरू होता है एंड आयरन जनरली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर बहुत ज़्यादा नॉजिया है उसके बाद जनरली द डॉक्टर स्टार्ट्स. मेरे केस में when my doctor recommended, so since I have already been in a good nutrition system, being a health coach, helping so many people, so I told her about something that I have been using, जो मैं पहले से ही यूज़ करती थी, which was some natural and chemical free sources of nutrition, and वो ही मैंने कंटिन्यू किया लेना throughout my pregnancy also. So I have been consuming vitamin C, vitamin B, which had a lot of variants of vitamin B, and with that vitamin D also I kept taking it even when she didn't recommend. So उसके dosage कम थी. So the one that I have been taking उसके dosage थे somewhere around 1900 IUs. एंड आप जब मार्केट से वो एलोपैथिक मेडिसिन का पता लाते हो उसमें सो वन ऑफ द टैबलेट इज हैविंग 60,000 IU. सो इनिशियल डेज में इन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इफ़ यू आर एट अ गुड विटामिन डी लेवल्स, बट स्टिल आई मेड श्योर कि मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेती रहूँ. सो 3 मैंने बताया. उसके अलावा आई वॉज टेकिंग ओमेगा 3. उसके अलावा आई वॉज टेकिंग आयरन एंड कैल्शियम ऑल्सो फ्रॉम दीज गुड नेचुरल सोर्सेज ओनली सप्लीमेंट्स. एंड इसके साथ साथ प्रोटीन इज़ व्हाट आई स्टार्टेड आफ्टर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया इट वॉज वेरी नॉजियाटिक. सो उसके बाद मैंने प्रोटीन स्टार्ट किया इन डिफरेंट फॉर्म्स, कभी इसको छाछ में लेना, कभी नींबू पानी में, एंड दैट मेड श्योर दैट आई हैड एनर्जी थ्रू आउट द डे टू सेल माई डे प्रॉपरली. एंड सिंस आई हैव अ 5 साल का बेटा भी है मेरा, सो इन दैट मैनर. But yes, by the end, so since I'm already in the 3rd trimester, so sleepiness is definitely more. I know I have been keeping myself very active, but still जो ये fatigue है, not exactly tiredness I would not say, but sleepiness वो on and off आ जाता है, that you just feel like you want to sleep. So that is a part of it. That is not something because you are deficient in something. So ये एक चीज़ मुझे बहुत ही खुशी है that I kept maintaining throughout my pregnancy. This is what I wanted to share. So if you have any comments or any queries, you can post it below. Thank you.